Good morning, student. Today's LCD topic is stomach. Myself, Dr. Sonia Tumra. So, stomach, another name of stomach is gaster or vent. So, stomach it is a muscular bag, okay, जो वाइडेस्ट होती है, डिस्टेंसेबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, ठीक है. अपवर्ड इट इज़ कंटिन्यू विद द esophagus, downward it continues with the small intestine. Then it helps in the it acts as a food reservoir. जब भी अपन food कुछ खाते हैं तो it will act as a food reservoir and it helps in a digestion of carbohydrate proteins. Okay. Then what are the various function of stomach? So stomach it acts as already told you that it is a reservoir of food. ठीक है. फिर ये फूड को सॉफ्टन करता है, गैस्ट्रिक जूस ऐड करता है, ठीक है. देन HCl सीक्रेट करता है जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, ठीक है. एंड वैसे ही लाइनिंग सेल्स ऑफ स्टमक जो रहते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करता है. जैसे HCl इट इज़ एसिडिक इन नेचर, सो उसकी वजह से स्टमक को डैमेज ना हो इसीलिए म्यूकस सीक्रेशन भी होता है, ठीक है. देन एक इंट्रेंसिक फैक्टर ये प्रोड्यूस करता है, ओके. एंड इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन दैट इज B12. So where it is located? So stomach, this is the stomach. It is located, it is placed obliquely in our body, okay. It is present in the umbilical, then the left hypochondrium and the epigastric region. So this is the epigastric region, this is the left hypochondrium region and this is the umbilical region. So location of the stomach, it is a placed obliquely placed रहता है and epigastric region, left hypochondrium and umbilical region भी ये include करता है. Then shape of the stomach. So shape of the stomach जब ये empty रहेगा, when it is empty ये J shape का होगा. पार्शियली अगर फिल्ड है तो ये पिरामिडल शेप का होगा. एंड अगर ओबेस पर्सन में ये हॉरिजेंटली वाइडेंड रहता है, ठीक है. और अगर ये जो स्टमक को हमें देखना है तो वी कैन हेल्प by examining this stomach by the giving patient barium milk. रेडियोग्राफिकली अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है. स्टमक इट्स वेरी डिस्टेंसेबल ऑर्गन, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है. इसकी कैपेसिटी 1.5 to 2 लीटर्स इन एडल्ट होते हैं, ठीक है. नाउ विल सी इट्स एक्सटर्नल फीचर. इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? It has 2 orifices, that is opening, then the 2 curvatures and 2 surfaces and mainly 2 parts. Then orifice, it has a cardiac orifice, pyloric orifice, 2 curvature, lesser curvature, greater curvature, 2 surfaces, anterior or anterior superior surface, posterior or posterior inferior surface. So this is the cardiac orifice. Cardiac orifice, it is a physiological sphincter, okay. It is present at the level of left 7 costal cartilage, okay. So it is a physiological, if you palpate this you cannot feel the sphincter, okay. Then okay, then there is another orifice, that is a pyloric orifice. Cardiac orifice, pyloric orifice. Pyloric orifice, okay, so it is present at the level of L1, okay, pyloric orifice. So on dissection you can feel the pyloric sphincter. Why the pyloric sphincter you can feel? This is due to the hypertrophy of circular muscle to form the sphincter. So this is the cardiac orifice, it has a physiological sphincter, so it cannot be filled,
while pyloric sphincter you can fill. Okay, so these are the two orifice. Then the curvature, the concave, you can see this concave or the right border of the stomach, it is a lesser curvature. It gives attachment to the lesser omentum. Okay, this lesser curvature, it forms the dependent part that is called as angular notch. Okay, this is the angular notch. Then this is the greater curvature. The greater curvature is a convex from the left border of the stomach. ठीक है. Above it gives attachment to this gastrophrenic ligament, and here it gives attachment to the gastrosplenic ligament. Okay. Then it has a two surfaces, anterior surface or also called as anterosuperior surface. ओके और एक पोस्टीरियर सरफेस है, उसे पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस कहते हैं. द स्टमक इज डिवाइडेड मेनली इनटू द टू पार्ट्स. दीज आर द कार्डियक पार्ट. सो स्टमक इट हैज़ द टू पार्ट्स, कार्डियक पार्ट एंड द पाइलोरिक पार्ट. So one imaginary line drawn from the angular notch up to the greater curvature. So this part is the cardiac part. So divided into the two main part. The larger part is called as a cardiac part, while smaller part is called as a pyloric part. Okay. Then from the cardiac notch, then the cardiac part of the stomach, it's further divided into the two parts. So from cardiac notch up to the greater curvature, this is the fundic part of the stomach, and between these two imaginary line, this is the body of the stomach. Okay. So the fundus is upper convex part hai. It doesn't contain food. It consists of only gas. Okay. So whenever in X-ray, in radiographic examination, you can see gas under the left dome of diaphragm. Okay. Then this is the body है जो pyloric antrum and the fundic part of stomach से रहती है. ठीक है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ कहाँ रहती है? फंडस, देन द बॉडी, और जिसमें तीनों टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स रहते हैं. ठीक है. दैट म्यूकस सेल, चीफ सेल और पराटस सेल्स. ओके. ये जो पार्ट है ये है पाइलोरिक एंट्रम. ठीक है. पाइलोरिक एंट्रम 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है, जिसमें पाइलोरिक ग्लैंड रहती है जो रिचेस्ट इन म्यूकस सिक्रेशन है. ओके. देन इट इज separated, there is another sulcus intermedius on a greater curvature. So this is the pyloric antrum. Then this is the pyloric canal, which is 2.5 centimeter long and tubular. Okay, and here it will continue as a duodenum. Then the relationship of the stomach, it has a visceral relationship and the peritoneal relationship. So the peritoneal relationship, so the stomach, it is lined by the peritoneum. So at the lesser curvature there is a lesser omentum is attached, while at the greater curvature greater omentum is there. Okay. नियर द फंडस ऑफ द स्टमक, यहाँ पे दो लेयर फ्यूज होके फॉर्म करती है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. ठीक है. वाइल दिस कार्डियक एंड जो है पोस्टीरियर सरफेस गिव्स अटैचमेंट टू द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट. ओके. देन visceral relationship. So in visceral relationship, first we'll see the anterior relationship. So this is the anterior relationship of the stomach. It's related to the liver, then the diaphragm and the anterior abdominal wall. Okay. Then
द डायफ्राम जो ये है, सॉरी ये जो डायफ्राम है ये दिख रहा है, ये डायफ्राम है, इट सेपरेट्स द लेफ्ट प्लूरा पेरिकार्डियम एंड द 6 to 7th रिब्स. ओके, देन जो पोस्टीरियर सरफेस, ये हो गया एंटीरियर सरफेस, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, देन द डायफ्राम, then the ribs and anterior abdominal wall. Now we'll see the posterior relationship. So posterior relationship, अब ये जो देख रहे हो ये एरिया रिलेटेड टू द डायफ्राम है, ठीक है, और ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, स्टमक बेड है. सो स्टमक बेड इज फॉर्म बाय द डायफ्राम, then the left kidney, left suprarenal gland, pancreas, splenic flexure, okay, then the splenic artery, ठीक है, and the spleen. sometimes क्या बोल रहे हैं कि splenic artery ये stomach bed में included होते हैं, but actually वो separated होती है by greater sac. okay, and so this is the stomach bed. okay, then we'll see the interior of the stomach. so interior of the stomach, so mucosa जो होता है empty stomach का, वो it folded upon itself to form the gastric rugae. ठीक है, गैस्ट्रिक रुगे जो ग्लेसर कर्वेचर के वहाँ पे लॉन्जिटुडनल होते हैं, वाइल इरेगुलर एट द एल्सवेयर रहते हैं. ठीक है, व्हेन इट इज डिस्टेंडेड द रुगे विल बी डिसअपियर्ड. ऑन द म्यूकोजल सरफेस नियर द रुगे यू कैन सी स्मॉल पिट्स. दिस आर द नथिंग बट इट इज द गैस्ट्रिक पिट्स. okay, then the gastric gland, one minute, then what is the gastric canal? so if you cut open along the lesser curvature there is gastric canal. whatever the liquid, swallowed liquid, it will directly pass through this gastric canal. it will never stay inside this stomach, it will just pass through this gastric canal. okay, and rest of the things are histologically, that is mucosal coat, everything. okay, now we'll see its blood supply. so before seeing blood supply, just see this is the celiac trunk. Celiac trunk gives main three branches. These are the left gastric artery, splenic artery and the common hepatic artery. okay, this common hepatic artery, it give one branches, that is a proper hepatic artery. This proper hepatic artery, it give one branch, that is a right gastric artery. and this from the common hepatic artery, one branch is the gastroduodenal artery. From this gastroduodenal artery there is a right gastroepiploic artery. okay, right gastroepiploic artery. then this is the left gastric artery. okay, this is the splenic artery. This splenic artery give one branch, that is a left gastroepiploic artery and the short gastric artery. So the left gastric artery, it is a branch of the celiac trunk, while the right gastric artery, it is a branch of proper hepatic artery. Right gastroepiploic artery, it is a branch of gastroduodenal artery, while left gastroepiploic artery, it is a branch of splenic artery. While fundus, it get blood supply by means of 5 to 7 short gastric arteries. okay, the right gastric artery and left gastric artery, it anastomosis along this lesser curvature, while the right and left gastroepiploic artery anastomosis along the greater curvature inside the lesser and greater omentum respectively. Then about is veins of the stomach drain into the parietal, superior mesenteric and the splenic veins. okay, then right and left gastric vein drain into portal vein,
and right gastroepiphytic vein ends to superior mesenteric vein, while the left gastroepiphytic vein and short gastric vein terminate into the splenic vein. Now we'll see is lymphatic drainage. So lymphatic drainage, for to understand the lymphatic drainage, it is divided into the four areas. A sorry A, B, C, D. द एरिया नंबर ए जो रहता है वो अपर लेटरल पार्ट में रहता है, दैट ड्रेन इनटू द पैनक्रियाटोस स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स, जो स्प्लेनिक आर्टरी के अलोंग रहता है. ठीक है, देन स्प्लेनिक आर्टरी के अलोंग जाके ये सीलियाक नोड्स में ड्रेन करता है. ओके, देन एरिया नंबर बी, it drains this part of stomach into the left gastric nodes along with the left gastric artery, and finally drain into the celiac nodes. The area number 6, C, it will drain into the right gastroepiploic nodes along the artery of same name. Then right from this right gastroepiploic nodes, it will drain into the subpyloric nodes, and from subpyloric nodes into this hepatic node, from hepatic nodes finally into the celiac nodes. The area number D, it will drain into the subpyloric nodes, from here celiac nodes, hepatic nodes, and from hepatic nodes directly into the celiac nodes. So in short, all this lymphatic drainage finally it will reach into the celiac nodes, and from celiac nodes it will go through this intestinal lymph to reach the cisterna chyli. Okay, now we'll see is nerve supply. So it has a sympathetic and a parasympathetic nerve supply. पहले बोलेंगे अपन सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई. सो सिंपैथेटिक नर्व जो T6 टू T10 सेगमेंट और स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, ये वासोमोटर रहते हैं एंड मोटर टू पाइलोरिक स्पिंक्टर रहती है, एंड जो मेन सेंसेशन है वो लेके जाते हैं. ठीक है, ये है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई. पैरासिम्पैथेटिक किससे आता है? वेगस नर्व से. सो दीज आर द टू. एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व रहेगी एंटीरियर साइड में एंड पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर नर्व. एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व मेनली इट कंसिस्ट ऑफ द लेफ्ट वेगल फाइबर, while the posterior gastric nerve it consists of the right vagal fiber. ठीक है, जो एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व है, जो लेफ्ट वेगल फाइबर, इट इज़ मेड अप ऑफ लेफ्ट वेगल फाइबर्स. ओके, then it gives branches to the fundus, then the body of the stomach and the pyloric branches. Okay, and the pyloric branches. Okay, these are the anterior nerve of Lataget. Okay, then this posterior nerve, posterior gastric nerve, which consists of the right vagal fiber, it gives smaller and gastric branches to the posterior surface of fundus body and the pyloric part of stomach, and it gives one larger branch to the celiac branch to the celiac ganglion. Okay, interior view. Now we'll move to this क्लिनिकल एनाटॉमी. इन क्लिनिकल एनाटॉमी गैस्ट्रिक पेन जो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, सो मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट, मैक्सिमम ऑफ कॉमन पीपल नो दैट गैस्ट्रिक पेन. व्हाई इट इज़? बिकॉज सेम नर्व सेगमेंट इज सप्लाई बाय द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ओके, पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर क्या है? सो पेप्टिक अल्सर एक अल्सर होता है, एसिडिटी जो हम बोलते हैं. सो ड्यू टू द इन द साइट्स ऑफ पेप्सिन, HCl, it can be occurred in the along the border of the lesser curvature या फिर duodenum. ओके,
सो वोमिटिंग की हिस्ट्री रहेंगी पेशेंट को, एच पाइलोरिक इन्फेक्शन रहेगा. ओके. देन नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक. Another is a gastric ulcer, also known as a stomach ulcer. It can be occurred at any part of the, but is more commonly along the lesser curvature of the stomach. Okay. Then it is maybe due to H pylori infection. Then the gastric carcinoma जो है, it is more common along the greater curvature of the stomach. So metastasis may goes into the left supraclavicular nodes. So palpable left supraclavicular node is that nodes is called as the signal nodes, and the sign is a Trozier sign. Okay. Then this is the hiatal hernia, that is a esophageal opening. It may be herniate through the esophageal opening, जो fundic part of stomach, it may be herniate or esophagus. So this is the hiatal hernia. Then pyloric obstruction. So pyloric obstruction may be congenital or acquired. It may be congenital or acquired. So due to this pyloric obstruction, the peristaltic movement you can see, it is very common. It can be very commonly seen in newborn. So after giving milk, the baby will just vomit out. So जैसे दूध दोगे वैसे वो vomiting करेगा. So in that, and you can also visible the peristaltic movement. Okay, so that suggests you of pyloric obstruction. This is all about the stomach. Thank you so much.